Welcome all. We are starting here chapter 7 frequency diagrams. We already have read about the diagrammatic presentation through the bar graphs, through the pie charts. Now in this chapter we will study about the different frequency diagrams like histogram, ogive curves and the polygon. Now first of all, in this module 1 we are starting the first topic, that is histogram. What is histogram? It is a graphical presentation of frequency distribution of a continuous series. In this, all rectangles are adjacent. You can see in this figure a histogram is given. This is very different from the बार डायग्राम हमने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था. नाउ इन दिस वी आर स्टडिंग अबाउट द हिस्टोग्राम जब भी हम बनाते हैं, दीज आर फॉर द कंटिन्यूस सीरीज़ जो हमारी होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ जो हमारी होती है, उसके लिए हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं और अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं. बार डायग्राम व्हेन वी ड्रॉ दैट वाज फॉर द डिस्क्रीट सीरीज. तो यहाँ हिस्टोग्राम जो है, दिस इज़ नॉट फॉर द डिस्क्रीट वेरिएबल्स. हिस्टोग्राम वी मेक फॉर द continuous variables. So you can see in this diagram all the rectangles meet each other and width of rectangle is according to the width of corresponding class interval. Histograms is of two types. These first is the when equal class interval is given, then we make the histogram, and second is when unequal class interval is given, then also we will make the histogram. Histogram जो equal class interval के होते हैं, these are those which are based on the data with equal class interval, and the other one is the histogram of unequal class interval. So height of histogram, you can see in this diagram, the height of histogram shows the frequency and the width of rectangles की जो width है, that shows the class interval and height shows the frequency. So and total area covered by histogram represents the टोटल फ्रीक्वेंसीज. जितना भी एरिया एक रेक्टेंगल कवर कर रहा है, दैट इज इक्वल्स टू द फ्रीक्वेंसी. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड द बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है? हिस्टोग्राम एक 2 डायमेंशनल फिगर है एंड बार ग्राफ वी ऑलरेडी हैव रेड इज़ अ 1 डायमेंशनल फिगर. हिस्टोग्राम is the frequency shown by the area of each rectangle. As I told you, width of rectangle, पूरा जो एरिया है एक रेक्टेंगल का, इन द हिस्टोग्राम that shows the frequency of the histogram. And here in the bar graph what happened, the height shows the frequency and the width has no significance. Histogram shows rectangles touching each other. As you saw in this figure, all the rectangles touches each other, but in bar graph, as we have drawn earlier, all the rectangles are separate from each other with equal distance. So this is the main difference between the bar graph and the histogram. Now first of all we are studying about the histogram with equal class interval. Equal class interval, when we make the histogram, you can see this illustration. इस example से आपको ये clear होगा कि हम किस तरह से एक histogram बनाते हैं by using equal class interval. तो ये इसमें आप देखिए equal class interval is given and the frequencies are given 0 to 10, 10 to 20. you can see continuous series है ये, और इस series में हमारा frequencies भी given है. तो ये हमारा simple, we will take the height, the frequencies on the y-axis and the class interval on the x-axis. हम हिस्टोग्राम में एक्स एक्सिस पर जो है वो लेते हैं क्लास इंटरवल और वाई एक्सिस पर लेते हैं फ्रीक्वेंसीज. एंड आवर रेक्टेंगल्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर. जो भी बाहर से हम बना रहे हैं हिस्टोग्राम में, दोज ऑल आर एडजेसेंट टू ईच अदर. एंड यू कैन सी इन दिस ग्राफ that I have made by using this given data, and I made this in this picture. You can see the different rectangles
by using the frequency given in the example. So this is the simple way of data presentation. This is the very popular way of data presentation. The histogram is very important way of data presentation.